Assalamu alaikum ji. Mohammed Shahzad Ali. Welcome to my YouTube channel, A Dedicated Civilian. क्या हाल आप सबके ठीक ठाक हैं? मैं भी अपनी तस्बीह पकड़ लेता हूँ. तस्बीह पकड़ने से बंदा अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है. एनीवेज, मैं एक वीडियो छोटा सा बनाना चाहता था इमरान खान की वॉच के मतलब, जो काफ़ी आजकल मीडिया में इसका स्टोरी टेलिंग चल रही है. ये ऑफ कोर्स करप्शन ही थी और I'll try to explain it very simply. The House of Saud, they are multi-billionaires. They gift their state allies very precious, very valuable items. And Pakistan, alhamdulillah, इज्जत अभी भी पाकिस्तान की लोग करते हैं on state to state level. Imran Khan, when he was the prime minister, he was gifted a very valuable watch. And watches are like jewelry because they are used with very precious metal. They are manufactured. Very rare gems and stones are used. Expensive diamonds, so they do not lose their value. And those certain precious items have their own value. And then, of course, a brand, uski bhi ek value होती है. Imran Khan was handed a very expensive, rare watch, a beautiful watch with Hana Kaaba. And the recent owner of that watch is very happy. He's very happy. And he's paid $2 million and he still has a smile on his face. Imran Khan was gifted this watch. उनने प्रोटोकॉल फॉलो किया, तोशम खाना में उस घड़ी को जमा करवाया. आफ्टर दैट उनके जो स्टेट लिंक्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ जो उनके लिंक्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके जो लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, क्योंकि बिहाइंड क्लोज डोर ये सब दोस्त यार तो हैं. इनकी दोस्ती एकदम तो नहीं ख़त्म हो जाती. मे बी दे माइट हैव डिस्प्यूट एंड डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, बट बिहाइंड क्लोज डोर्स they still have that bridge to communicate. When Imran Khan was the prime minister, at that time his connections were at the peak. He used his influence, his friends, their influence, and he managed to get the department in Tosham Khana to devalue the watch. Watch की value $5 million है, and plus per $1 million में $10 lakh होता है. $1 lakh almost 1.5 करोड़ 2 करोड़ बन जाता है. $1 lakh. वैल्यू थी वॉच की 5 मिलियन. इनने अपने लिंक्स के थ्रू उसको 10 करोड़ शो करवाया. Of course, this is corruption from the federal government as well. But this is how fraud is. This is a very simple fraud. और 10 करोड़ शो करवा के 2 करोड़ 20% he purchased the watch. And now he is the owner of the watch. And of course, इन्हें homework तो किया हुआ था. And then they went into the black market and they fought a buyer and they sold it for $2 million. आर्ग्यूमेंट तो लोग करेंगे, जो जुनूनी लोग हैं वो पीटीआई के, वो तो यही कहेंगे जी उसने अब महंगी बेची सो क्या हुआ. व्हाट्स द बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट इट? द क्वेश्चन वाज एंड द आंसर इज he through his links in Tosham Khana he managed to get the watch's value just 10 crore. If he was to go by the actual value of the watch, which will be almost $5 million, for example, $5 million, you can imagine the amount, how much that will be. As I mentioned, in $1 million is 10 lakh. $1 lakh बनता है almost 2 करोड़ 1.5 करोड़. So you can imagine the calculation, what the actual value of 20% would have been. So this is corruption. This is fraud. Yes, previous जो governments आई हैं, जो उनके heads हैं, सब corrupt थे, हमें पता है. लेकिन इमरान खान ने तो 25 साल जिंदगी के हमें यही सिखाया जी, we must fight corruption. We must awaken ourselves against this rotten system in place. And in the end, his actual
characteristics, discreet, that he plays behind closed doors, they're also being revealed. इनकी मिसेज जो खुद बड़ी दीनदार हैं, आई थिंक आखिर में चाहे इमरान खान का इन्फ्लुएंस है चाहे उनकी अपनी एक नेचर है, इन लोगों ने तो अपनी जन्नत दुनिया में बना ली है। बस हमारे लोकल जो फवाद लाला, वो भी सियासत के पीछे दे कीप क्वाइट एंड दे जस्ट गो विद द फ्लो। बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। अल्लाह से डरना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान है, इसी तरह करप्शन होती है ऑन एवरी लेवल, चाहे इट इज़ construction of roads, bridges, purchasing of certain expensive military wear. There will always be a certain commission, and they show a price on the books of something else, but in actual the purchasing was totally something else. And if they want to go further in corruption, then they will haggle around with the material. And this is how Pakistan works. But इस वॉच की जो बात है, ये वॉच की करप्शन हुई है, ये फ्रॉड था, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स करप्शन। एंड बस क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मैं एक चीज़ और बोलूँगा, आर्मी के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, प्लीज़ ओवर इमरान खान do not go against the army chief. Even though I'm not a fan of this current army chief, because they have also tried to become politician. सारी जिंदगी बाजवा साहब ने as a decorated officer काम किया, मेहनत की, and in the end he wanted to start playing politician as well. Let's see how that fares out for him. But still, the army should always, be very strong with the army chief, with their own loyalty, with their own system that they have in place, and that's it. Imran Khan, बस अल्लाह पाक इसका भी चेहरा रिवील करवा रहा है, आगे अल्लाह पाक इसका भी चेहरा रिवील करवा रहा है, आगे अल्लाह हदायत दे, लोग दे पीटा। इमरान खान सूर की बोटी खा ले तो वो हलाल है, कोई और खाएगा सूर की बोटी तो वो हराम है। अब ये इनके मसले हैं, क्या बंदा करे इधर।